Good morning to all of you. Am I audible? Good morning. Good morning. So in today's class, we have to start a new topic. Okay, new topic in the sense ki in the same phase we are discussing. Okay, now we are discussing some of the most important topics which will be helpful for you in prelims exam also. We are discussing this time frame. Okay, what happened? What important development took place between this 1857-58 to 1885. 1885 year is the birth of INC. Okay, so in this part, we have discussed a few important events earlier also that are important for your exam. One was what? Change of political power from EIC to Crown. The second is Queen Victoria's proclamation. You all know. Administrative changes that were introduced after Revolt of 1857. Okay, you all know about this. Act of 1858. This we will discuss in detail in the topic constitutional development. Okay, then I discussed with you one topic, that is Lord Mayo. In last class I have discussed with you Lord Mayo. I have only discussed those informations which may be important for your exam. जहाँ पे जितना extension का जरूरत है इस क्लास में हम उतना लेंगे. If any topic we need to know more, we will discuss more. The another topic that I discussed with you was Lord Ripon. लॉर्ड रिपन, इसको भी डिस्कस किया था. व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन? ओके, 1882 1884. ठीक है, दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड लिटन. नाउ लॉर्ड रिपन 1880 to 1884. Now between this time period there is another viceroy which is very important, and when you look at the PYQs you will find a lot of questions have been asked from that topic, and that is what? Lytton. Okay, Lytton is very important. Okay, you will get a lot of PYQs from this topic, Lytton. And what is the time period of Lytton? So the time period of Lytton was 1876 to 1880. Okay, 1876 to 1880. Okay, so these are some of the important administrators. ठीक है, इसके बाद लॉर्ड मेयो के बाद द नेक्स्ट वायसराय वाज लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, जो जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, यहाँ पे एक गैप है ना, 1872 to 76. सो देयर वाज लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 72 से 76 तक. ठीक है, इफ यू वांट टू फिल दिस गैप. ओके, तो अच्छा देखो, these three are most important. Can they ask to arrange in chronological order? If you UPSC want to ask some question, they can ask to arrange in chronological order. Some important names they will ask, plus बीच में एक दो नॉट इम्पॉर्टेंट को भी इंक्लूड कर देंगे. तो यहाँ पे एक है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ओके इसको लिख लो जिससे कि ये जो गैप है इसको आप फिल कर सको. 1872 to 1876. ठीक है ना, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. These three are important. So now in today's class we are going to focus on Lytton. Okay, the time period of Lytton is very important. The administrative actions that were taken by Lytton were very important, right? Lytton was a man of ideas. ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट था, but okay, he is not considered as a good viceroy. He is not considered as an enlightened viceroy. Okay, his administrative policies failed. His tenure is known for oppression and repression of Indian people. Indian लोगों को काफी परेशान किया Lord Lytton, and this we need to understand. Okay, so the topic is Lord Lytton. This is the topic, Lord Lytton. Now in Lord Lytton, what are the important aspects that we need to understand, जिसको हमें समझने की जरूरत है. Okay, so first we will highlight those aspects, then I will enter into details. What are the important aspects? So the first important aspect here is, okay, financial reforms introduced by Lord Lytton. ठीक है ना, that is the first aspect, financial reforms that were introduced by Lord Lytton, that were introduced by Lord Lytton.
फाइनेंशियल रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिटन। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्लियर? नाउ these financial reforms strengthened the financial condition of the government of British India at that time। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को फायदा हुआ इस फाइनेंशियल रिफॉर्म से। तो ये क्या हो गया? दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट, दैट दिस financial reforms did what? It strengthened the financial condition. It strengthened the financial condition of government of India. At that time, the government of India means what? British Indian government. When I will use the word government of India, it means I am talking about British Indian government. This is the very general thing. Okay. Now, the second important efforts of Lytton was in the field of famine relief. That is also very important. Famine relief. Clear? And in India, there was a great famine. जैसे बंगाल का फेमाइन था ना, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। The time period was 1876 to 78। और इस पीरियड में वायसराय कौन है? लिटन है। ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो द ग्रेट फेमाइन ऑफ इंडिया, द ग्रेट फेमाइन ऑफ इंडिया, द ग्रेट फेमाइन ऑफ इंडिया। और ये कब है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1876 टू 1878। एक और फेमाइन था, द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। बता सकते हो कब था? 1770, during the dual system of government in India, and that is the great famine of India। ठीक है? 1876 to 1878। okay, now in the same period जब यहाँ पे great famine हो रहा था, right, read this, दरबार, दरबार, दरबार was held। the context of दरबार I will discuss later। अभी केवल दरबार लिख दो। okay, तो आप समझ पाओगे। दरबार, the context of दरबार I will discuss later। the context of darbar I will discuss later। ठीक है ना? darbar was held। the context of darbar we will discuss later। now the third important point, read this, VPA, vernacular press act 1878। ठीक है? next is arms act 1878, is also known for this। vernacular press act 1878, arms act 1878। okay, right, next point। okay, civil services, civil services reforms and Lytton। This aspect is also very important aspect। Civil services reforms and Lytton, civil services reforms and Lytton। Clear? Then the next aspect is Second Anglo-Afghan War, Second Anglo-Afghan War and Lytton, Second Anglo-Afghan War and Lytton। These are some of the most important aspects, okay, or developments at the time of Lytton। ठीक है? लिटन के टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स एट द टाइम ऑफ लिटन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिटन। एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हेन यू लुक एट द पीवाईक्यूज में यू विल फाइंड दैट पीवाईक्यूज हैव ऑलरेडी कवर्ड आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, फेमाइन रिलीफ, दरबार, ये सारे मुद्दे तो पूछे जा चुके हैं। okay, in some of the PYQs you will also get this part, Second Anglo-Afghan War। but if UPSC will explore the unexplored, so UPSC will enter into which part? Financial reform, civil services reforms and Lytton। तो आपको आइडिया भी बता रहा हूं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। द पॉपुलर टॉपिक्स विच हैव बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, ओके, यू विल हैव टू फाइंड द गैप्स कि उस पॉपुलर टॉपिक से कहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। गॉट इट? इन दिस वे वी कैन predict the things। ठीक है? and this is how UPSC frames the question। they will choose the popular topics, they will find the gap that is unexplored part in that topic and they will ask questions। clear? so this is the second stage of preparation। पहले तो हमें पॉपुलर टॉपिक तो पता ही होना चाहिए ना, फेमाइन रिलीफ पता होना चाहिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पता होना चाहिए, आर्म्स एक्ट पता होना चाहिए, तब तो आप जान पाओगे कि गैप क्या है। If everything is new for you, so you will not be able to identify the gap। so we will start with the very first topic, financial reforms। यहीं से start करेंगे। now yes please। so we consider these as a reforms, right? but reforms means that it occurs
देखो तो in administration, okay, he is an administrator, viceroy. So whatever the changes he will be introduced, it will be kept under the category of reforms. But looking at its impact on Indian people, right? When we will evaluate, okay, we can just give our estimate about the impact was good or bad. ठीक है कि रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल हो रहा था, क्या ये रिफॉर्म्स केवल और केवल कॉलोनियल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे थे, गॉट इट, ये इससे इंडियंस को कुछ बेनिफिट हो रहा था. तो दिस इज द एस्टिमेशन पार्ट एंड वी विल बी एबल टू डू इट वंस वी फिनिश द टॉपिक. आप खुद ही ये बताओगे कि इसके रिफॉर्म व्हाई ही इज फेल्ड. देखो व्हेन वी टॉक अबाउट लिटन आकाश, सो ही वाज बेसिकली, जैसे हर गवर्नमेंट के कुछ चहेते ऑफिसर्स होते हैं, आपको पता ही है, इंडिया में भी होता है, सब कुछ तो हमने अंग्रेजों से ही सीखा है. तो इंग्लैंड में गवर्नमेंट थी बेंजामिन डिज़रायली की, और उसका सबसे चहेता ऑफिसर कौन था, लिटन. ओके, he was one of the favorite officers of this conservative government of Benjamin Disraeli. Okay, and the government requested Lord Lytton to come to India and assume viceroyalty of India. गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही थी लॉर्ड लिटन से कि भाई इंडिया चले जाओ, वायसराय बन जाओ. उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा. फाइनली द गवर्नमेंट वाज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग समहाउ. ठीक है, and then Lytton was agreed that yes, I will go and assume the responsibility of Viceroy of India. Now you must try to find out the reason why the government was requesting Lytton, because Lytton was very intelligent. He was very smart in handling the administrative challenges. And this period, what is happening? Administrative challenges in India before the colonial government. स्टोरी की तरह समझो. 1857 के रिवोल्ट के बाद, ठीक है, अलादीन का जो चिराग है, क्या कहते हैं उसको, उसका जिन्न बाहर निकल चुका है, वो है एजुकेटेड इंडियंस. पहले उनको क्या लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विल ब्रिंग रिफॉर्म्स. 1857 रिवोल्ट में व्हाट दे डिड, दे रिमेन न्यूट्रल. बट नाउ दे आर डूइंग व्हाट, आरपीएस, याद है ना, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन. अब वही आगे बढ़ गए हैं लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, राइट. सो द रोल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इज ट्रांसफॉर्मिंग. नाउ दे आर बिकमिंग द मीडियम टू प्रमोट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द इंडियन पीपल. अब तो वो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है. यानी कि इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को डील किससे करना है, एजुकेटेड इंडियन से डील करना है. ठीक है, एंड दिस इज द टाइम पीरियड वेयर देयर इज द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. इसी समय इंडिया में क्या हो रहा है, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. अच्छा, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म विल बी गुड फॉर द परपेचुइटी ऑफ ब्रिटिश रूल और बैड, इट विल बी बैड. Growth of Indian nationalism, okay, will do what, it will just, okay, try to disturb the dream of British. Okay, it will just you can say that it will just, it is like an attack on the dream of the British that we are going to make a permanent colonial empire in India. So a smart person was needed. इसके पहले कौन है, याद करो, लॉर्ड मेयो. लॉर्ड मेयो ने क्या किया, दिल मांगे मोर. इनके मोटिवेशन को, इंडियंस के मोटिवेशन को और बढ़ा दिया उसने. फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोविंसेस विल गेट द ग्रांट्स एंड एवरीथिंग. ओके, वो भी क्यों कर रहा था, सो दैट ही कुड एकोमोडेट द एजुकेटेड इंडियंस. ध्यान रखो, रिपन के टाइम में या मेयो के टाइम में जो रिफॉर्म्स हैं, उस रिफॉर्म से अपीज किसको किया जा सकता था, विच क्लास कुड बी अपीज्ड, एजुकेटेड इंडियंस क्लास. ठीक है, क्योंकि बाकी आम आदमी को कहां समझ में आता है कि भाई सेंट्रल ग्रांट का एक हिस्सा प्रोविंसेस को मिलेगा, प्रोविंसेस अपने हिसाब से खर्च कर पाएंगे, ये बात कौन समझ पाएगा, एजुकेटेड इंडियंस. तो ये तरीका किसका था, इसके पहले लॉर्ड मेयो का, कि हाउ टू हैंडल दिस एजुकेटेड इंडियन क्लास. आगे चल के तरीका किसने निकाला, रिपन ने, रिफॉर्म से. बट लिटन का तरीका बिल्कुल अलग था. लिटन वॉज अ डिप्लोमैट and he had occupied different offices in Britain. ब्रिटेन में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑलरेडी ये हेल्ड कर चुका था, राइट. एंड व्हेन ही केम टू इंडिया, ओके, ही वाज नॉट हैविंग यू कैन से दैट अ बेसिक, उसको इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता था.
He was completely unaware, and within 4 years he did what? He introduced a lot of changes in Indian system of administration. जैसे ये चीज हमने जो वायसराय है, सिविल सर्वेंट्स हैं ब्रिटिश पीरियड में, उसी से तो इंडियन सिविल सर्विसेज का मॉडल हमने कॉपी किया. व्हेन यू विल बिकम आईएएस, ओके, आप हमेशा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं रहोगे. ध्यान रखो, आप पता चला आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कल को आपको पता चला कि, है ना, एमसीडी दे दी गई, कभी आपको दे दिया गया इलेक्ट्रिसिटी दे दिया गया, कभी आपको टेलीकम्युनिकेशन दे दिया गया, कभी आपको रेलवेज में बिठा दिया गया. तो क्या आपको पहले से जानकारी है रेलवेज की? नहीं, नई जानकारी है. ठीक है, तो आपको हर बार क्या, इसी को कहा जाता है सिविल सर्विसेज गिव्स अस न्यू चैलेंजेस, है ना. एन एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑलवेज रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस, और यही तो इस सर्विसेज की खूबसूरती है. ठीक है, कि आपके पास लगातार नए नए चैलेंजेस आएंगे, और सोचो जो इसमें स्मार्ट होगा वो अपनी एबिलिटी को तो प्रूव कर ही देगा ना. जिस डिपार्टमेंट में जाएगा वहां पूरे के पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगा. एंड द सेम विल हैपन विद लिटन आल्सो. व्हेन लिटन वाज विल कम टू इंडिया, ही वाज कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रैक्टिसेस और जो सेटअप है. नाउ व्हेन ही कम्स टू इंडिया, सबसे पहले वो क्या करेगा? रिवोल्ट ऑफ 1857, सपरेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मिलिट्री एक्सपेंसेस, peace and order was disrupted, trade disrupted. Now Indians were having disbelief in the British administrators. Okay, तो ये सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया था, जिससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज आल्सो पुअर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर लिटन इज टू गियर अप, ओके, द फाइनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, कि इंडिया में जो फाइनेंशियल कंडीशन है गवर्नमेंट की, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए. पहला काम वो ये करेगा. And with this respect, the first topic comes, that is financial reforms introduced by Lord Lytton. ठीक है, तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर सबसे पहले यही फोकस करेगा. So that is what financial reforms introduced by Lord Lytton. Lord Lytton. I will discuss some important concepts here. वैसे हैं तो बहुत सारे points, but I will discuss some important concepts. And what is the important concept? समझो. Why financial conditions were deteriorating. सबसे पहले ये समझना है, financial conditions were deteriorating. The profit or margin of the government was coming down. जो ट्रेड एंड कॉमर्स से मार्जिन था वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था. क्यों हो रहा था कम? इसका सीधा सीधा रीजन क्या है? पहला क्या है? रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस. रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस विल प्रोमोट अ काइंड ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल. उनको अंग्रेजों से अगर नफरत होगी तो इंग्लिश प्रोडक्ट से भी नफरत होगी, सीधी सी बात है. क्लियर? तो दिस विल डिसरप्ट ट्रेड एंड कॉमर्स टू सम एक्सटेंट, वी कैन से. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इन इंडिया इज दैट न्यू कॉटन मिल्स वेर ओपनड बाय इंडियंस. नाउ न्यू कॉटन मिल्स वेर ओपनड बाय इंडियंस, ओपनड बाय इंडियंस. और ये कब हो रहा था? इट वाज हैपनिंग इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th century. न्यू कॉटन मिल्स वेर ओपनड बाय इंडियंस. इंडियंस अपनी नई कॉटन मिल्स खोल रहे थे, एंड हियर द ओनरशिप वाज विद द इंडियन पीपल. तो इफ इंडियंस विल ओपन न्यू कॉटन मिल्स, okay, the level of political awareness among the Indians will increase. So will it affect the British industries? Yes or no? Yes. Clear? So this problem was increasing. Now how to solve this problem? Indian cotton mills were now again giving challenge to the British textile industry. Indian people were filled with the idea of nationalism, and now there are Indian cotton mills. Okay, so this will give a challenge to the British textile industry. So what British can do? Okay, so import duties on cotton. Write this. Import duties on Indian cotton textiles will be increased. Import duties on Indian cotton textiles will be increased. Import duty को क्या कर देगा? Increase कर देगी गवर्नमेंट. Okay, इससे क्या होगा? 30 कॉटन मिल्स विल बी अफेक्टेड, देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड, और इससे ब्रिटिश का प्रॉफिट अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. गॉट इट? दिस विल हैपन. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस इंपोर्ट ड्यूटी विल बी इंक्रीज्ड? व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ इंडियंस? इंडियंस विल अपोज और नॉट? यस, इंडियंस विल अपोज. लोग सड़कों पे निकल आएंगे, और उनका नारा क्या होगा? व्हाट विल बी देयर स्लोगन? ओके, रिडक्शन ऑफ कॉटन इंपोर्ट ड्यूटीज. तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो दिखता है. राइट दिस. ओके,
Now the people demanded to reduce cotton import duties. Now the people demanded to reduce cotton import duties. Okay, cotton import duties. Got it? Cotton import duties. लोग इसकी भी डिमांड कर रहे थे. Plus at the same time we see the Great Famine. Great Famine का टाइम पीरियड क्या है? Great Famine 1876 to 1878, यही टाइम है ना. तो Great Famine also worsened the financial condition of Indian people. इससे भी लोग परेशान थे. You can read this that the Great Famine also worsened the financial condition of Indian people. Great Famine also worsened the financial condition of Indian people. ठीक है, ग्रेट फेमाइन ऑल्सो वर्सेंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडियन पीपल. तो क्या लोग सड़कों पे आ जाएंगे कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी को अपोज करने के लिए? हाँ, ठीक है, लोग सड़कों पे आ जाएंगे. अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का क्या करेगा? आंदोलन को बहुत लंबा चलने देगा कि आंदोलन को वहीं पे खत्म करने की कोशिश करेगा? एग्जैक्टली, ठीक है. ये बात ध्यान में रखना कि a good administrator will do what? Okay, if you will find that these kind of protests will keep on continuing, तो प्रोटेस्ट लोगों में क्या करेगा? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रोमोट करेगा. बहुत ध्यान से समझना. When the people will come on the roads, okay, and they are protesting day by day, if the protest will be prolonged, okay, so this will gather the support of the people. So what Lord Lytton will do? Read this response of Lord Lytton in this situation. Right? Lord Lytton ने क्या किया? Lord Lytton abolished the import duties on some selected articles. ठीक है? Total 29 articles थे. Okay, so he, okay, abolished the import duties on some selected articles. He abolished the import duty on some selected articles. Selected articles. Write one point on a particular type of cotton, that is coarser kind of cotton goods. On a particular coarser इसको बोलते हैं, ठीक है, मोटा सूती कपड़ा. Coarser kind of cotton goods on a particular kind of cotton goods. Okay, import duty was removed. Import duty was removed. ठीक है, मतलब पूरे कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी नहीं रिड्यूस किया उसने. क्या किया? ऑन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी वाज रिड्यूस्ड. नाउ टेल मी हाउ यू विल. अब आप जरा एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से सोचो, आप इस रिफॉर्म को किस तरह से देखते हो? Was these reforms introduced for the betterment of Indian people or to pacify the protest? Exactly, to obstruct the growth of Indian nationalism. हमेशा सप्रेस ही नहीं किया जाता है, कई बार मुद्दों को भी दबाया जाता है. So he did this very successfully. Clear? This is point number 1. Now the second point, what will happen? देखो financials में the second point I am going to discuss with you. One part we have already discussed. Lord Mayo context you all know ना, कल की क्लास में बता चुका हूँ. Lord Mayo context 1869 to 1872. Lord Mayo ने क्या स्टार्ट किया था? Lord Mayo introduced for the first time in India, for the first time, क्या था? Financial decentralization. Financial decentralization for the first time introduced by Lord Mayo. और इसमें क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, it will allocate a definite sum or amount to provincial governments. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को it will allocate a definite sum or amount to the provincial governments. यही तो था. Central government will allocate a definite sum or amount to the provincial governments. Clear? Right? Now what Lord Lytton will do? तो Lord Lytton है, okay, Lord Lytton. Lord Lytton का टाइम पीरियड क्या है? 1876 to 1880. So write this, financial decentralization will be continued here. यहाँ भी financial decentralization क्या होगा? It will be continued. Okay. Now write one more point. Okay, right. Provincial governments, right, were empowered. Lord Lytton के टाइम में क्या हुआ? Provincial governments were empowered. How they were empowered? This is the question.
The provincial governments were further empowered. How they were empowered? So write this point. Provincial governments were given the control of expenditure on all provincial governments were given the control of expenditure on all ordinary provincial services, on all ordinary provincial services, right? Provincial governments were given, right, the control over expenditure on all provincial services. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे. Read this example. What is the example of these services? Right, like land revenue. Structure ड्रॉ करके लिखना. Land revenue, excise, stamp, land revenue, excise, stamp. Okay. Law and justice. Law and justice. Law and justice. Okay. Law and justice. Law and justice. And general administration. Law and justice and general administration. Okay. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. अंग्रेजी सरकार की चाल क्या थी? एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से ले लेना. ठीक है. वो हर पॉलिसी में अपना फायदा करते थे. कैसे करेंगे ये बात समझो. प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपने एम्पावर कर दिया, ठीक है, कि आप एक्सपेंडिचर मैनेज करोगे ऑर्डिनरी प्रोविंशियल सर्विसेज के, आपके पास जो पैसा आ रहा है उससे. ध्यान से समझना. मेयो ने क्या कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक फिक्स सम किसको देगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को. यहां लिटन ने स्पेसिफाई कर दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस पैसे से कहां कहां एक्सपेंडिचर कर सकती है, लेकिन इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट प्रोविंशियल गवर्नर को नहीं किया जाएगा. आपको आपके पास जो सोर्सेज है उसी से मैनेज करना होगा. और दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके पास सरप्लस रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो वो सरप्लस रेवेन्यू में से आपको शेयर देना पड़ेगा. किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. अब बताओ ये किसके लिए फायदेमंद है? कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पावर को बढ़ा दिया एक्सपेंडिचर को लेके, कि आप ये सारे एक्सपेंडिचर अपने फंड से करोगे, बट अलग से इसके लिए कोई भी अमाउंट एलोकेट नहीं किया. किसको? प्रोविंशियल गवर्नर को. और ये भी कहा कि इन केस अगर रेवेन्यू है ना आपके यहाँ कलेक्शन ज्यादा होगा तो जो सरप्लस रेवेन्यू कलेक्शन है वो सेंटर और प्रोविंस दोनों में क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा. इन दिस वे व्हाट ही वाज डूइंग, he was trying to increase the income of central government or government of India. He was trying to improve the financial condition of the central government or government of India. वो उनके financial condition को improve करने की कोशिश कर रहा था. In the name of reforms, what he was trying to do? He was trying to improve the financial condition of government of India. So write this point. This will become clear. ठीक है. Write this point. Right. Okay. For this purpose, the provincial governments were not given any increase in fixed grant, or in fixed grant no amount was increased for this purpose. Fixed grant fix ही होगा. Okay. Fixed grant amount was not increased. Provincial governors were not given any extra amount for this. Okay. Fixed grant was not increased. Provincial governors were not given any extra amount for this. Is it clear? Extra amount for this. And write one more point. Write this. In case of surplus revenues, okay, a new provision was made. In case of surplus revenues, a new provision was made. Surplus revenue के केस में एक नया provision आया. In case of surplus revenues, a new provision was made. And what is the provision? Right. The provision was to share the surplus revenue with the central government, okay, on an equal share basis. The provision was to share the surplus revenue with the central government, okay, with the central government on an
equal sharing model, equal sharing model, equal sharing model. So by this structure, what will happen? By this structure, the income of the center will improve. मेरी बात समझ गया ना? जब ये चीज डिफाइन नहीं थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे पैसा नहीं खर्च करेगी। ऑलरेडी मेयो ने क्या कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डेफिनिट अमाउंट किसको देगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। लिटन ने कहा कि उस डेफिनिट अमाउंट में से प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सब जगहों पे पैसा खर्च करेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो भी सरप्लस रेवेन्यू होगा वो इक्वली शेयर हो जाएगा किसके किसके बीच में? सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। व्हाट डज इट मीन? राइट कंक्लूजन, conclusion, write this. these reforms improved the these reforms improved the financial condition of the central government as a whole. These reforms improved the financial condition of the central government as a whole. These reforms improved the financial condition of the central, okay, government as a whole. Okay, this is one thing how he increased the revenues of the central government. Now write salt taxes context. ये भी एक important है, salt taxes context. Salt taxes में क्या किया लिटन ने? Salt taxes context. Yes. Independent provincial government was established. So the system was like that for the operation purpose, like for the revenue collection or everything. They were giving money as per the provincial government demands, right? वहां पे क्या था ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस चीज को और ज्यादा डिफाइन किया लिटन ने, इतना किया। मेरी बात समझ गया? न्यू प्रोविजंस वर मेड, ओके, एंड द सब्जेक्ट्स वर डिफाइंड, ठीक है, कि कहाँ पे वो पैसा खर्च करना है, प्लस रेवेन्यू सरप्लस होगा तो उसको शेयर करना है। सो ही एडेड सम न्यू प्रोविजंस इन दैट, ठीक है, ये चीज थी। रिपन के टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आएगा, अभी वो नहीं है, ठीक है ना, ये समझना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, राइट दिस सॉल्ट टैक्स कॉन्टेक्स्ट, ओके। इसमें पॉइंट 1 राइट दिस, attempts were made, attempts were made, attempts were made to equalize the rates of salt duties. Attempts were made to equalize the rates of salt duties in British provinces. Attempts were made to equalize. Attempts were made to equalize the rates of salt duties in the British provinces. Attempts were made to equalize the rates of salt duties in the British provinces. Got it? Okay. दूसरी चीज देखो, there were two kind of states after 1858 ना. One was the British provinces and the second was the princely states. Now these princely states were having the right to manufacture salt. क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट थे, ऑटोनोमस थे अपने मामले में, तो प्रिंसली स्टेट्स के पास क्या था? द राइट टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट. नाउ व्हाट लॉर्ड लिटन विल आस्क द प्रिंसली स्टेट? लॉर्ड लिटन विल से दैट द प्रिंसली स्टेट्स विल हैव टू सरेंडर देयर राइट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट. अब सॉल्ट केवल और केवल कौन बनाएगा? सॉल्ट टैक्स कौन लेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट. ध्यान से समझना, गांधी के टाइम में, सीडीएम के टाइम में एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सॉल्ट टैक्स, एंड दैट इज सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स की जनता भी उस सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेगी। लिटन ने क्या किया? राइट दिस पॉइंट, ओके, राइट। प्रिंसली स्टेट्स वेर ऑल्सो आस्क्ड, प्रिंसली स्टेट्स वेर ऑल्सो आस्क्ड टू सरेंडर देयर राइट्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट. Princely states were also asked to surrender their rights of manufacture of salt, okay, to the government, to the government, to the government. Right, third point, interstate smuggling of salt was stopped. Interstate smuggling of salt was stopped. इन सब से क्या होगा? द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट रेवेन्यू, इट विल शूट अप, ये इंक्रीज कर जाएगा. सो राइट दिस रिजल्ट, द गवर्नमेंट रेवेन्यूज
increased, shoot up due to this reforms in salt tax. Government revenue increased, or you can say that it was shoot up due to this, okay, reform. So overall, what can we say? Overall, we can say that Lytton made efforts to increase the revenue of British Indian government, okay, and these reforms were successful. He was successful in increasing the revenue collection, or you can say that saving expenditure of the British Indian government. तो बताओ यहाँ पे वो एक ये कह सकते हैं कॉलोनियलिज्म के स्ट्रक्चर को और मजबूत बना रहा है कि नहीं? यस, ही वाज मेकिंग दिस कॉलोनियल स्ट्रक्चर more powerful. So write this conclusion part में. Therefore we can say that, therefore we can say that Lord Lytton was successful in improving the Lord Lytton was successful in improving the financial conditions of the central government in India. Lord Lytton was successful in improving the financial condition of central government of India. Financial condition of central government of India. Now we are coming to the context number 2. This part is clear in the structure. Lord Lytton, this part, financial reforms introduced by Lord Lytton strengthened the financial condition of government of India. तो यहाँ पे 2 context बताने हैं आपको. 2 context how he was successful in increasing the revenue. एक बता देना है central government, provincial government, okay. ये वाला context. दूसरा salt tax context. There are other examples as well, but I think that 2 are sufficient. Now write this number 2. Number 2 is famine relief. Number 2. Number 2 is famine relief and Lord Lytton. Famine relief and Lord Lytton. The context of famine relief and Lord Lytton. क्या है? Okay. So Lord Lytton took steps. Okay. देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेट फेमाइन वाली बात रह देते हैं. ग्रेट फेमाइन इन इंडिया. The time period is 1876 to 1878. And Lord Lytton time period is 1876 to 1880. So what Lord Lytton did? He took steps. Read this. He took steps for famine relief. He took steps for famine relief. Steps ली famine relief के लिए. But these steps were half-hearted steps. Read this. Half-hearted steps. Half-hearted steps. And they were not successful. They were not successful in mitigating the effects of famine. They were not successful in mitigating the effects of famine. This is the reason that Lord Lytton is also called ruthless viceroy, cruel viceroy. But इसने effort क्या किए? देखो effort में this fact is an important fact for prelims. Highlight कर लेना 1878. 1878. Highlight करो. This is an important fact for prelims. A famine commission was appointed. 1878. Year is also important. Highlight most important for prelims. A famine commission was appointed. Famine commission was appointed under the chairmanship of Richard Strachey. And this is also called Richard Strachey Commission. तो कभी एग्जाम में आए कि Richard Strachey Commission, so you will say that it was related to famine. Okay, Richard Strachey Commission. Now what was the basic purpose or task of this Richard Strachey Commission? Richard Strachey Commission का purpose क्या था? Why this commission was set up? Okay, so write point 1. Point 1. Okay, to inquire about the causes of famine. To inquire about the causes of famine. To inquire about the causes of famine. एक क्वेश्चन तो आपका इसी से बन सकता है. Richard Strachey Commission, famine commission. This is a separate question. ध्यान रखना. Okay, to inquire about the causes of famine and write. Okay, point number 2. Okay, point number 2. Point number 2 is what? Right. Okay, how to ensure the famine relief. How to ensure relief during famine. Okay, so the commission had to give recommendations on this. Clear? Commission को recommendation देना था.
Now write this, some recommendations. Recommendations क्या है? Richard Strachey Commission के what are the recommendations? Write recommendation number 1. All these are the prelims question. Write recommendation number 1. Okay. It recommended that all able-bodied person, okay, all able-bodied person should be given employment on daily wages basis. All able-bodied person should be given employment. All able-bodied person should be given employment on daily wages basis. अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक बात बताओ, इससे क्या पता चलता है कि फेमाइन का एक कॉज क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ था? ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से हुआ था। तो इंडिया में जो फेमाइन थे वो नेचुरल थे कि मैनमेड भी थे? मैनमेड भी थे, क्योंकि इनकी कमीशन के ही रेकमेंड कर रही है कि ऑल एबल बॉडीड पर्सन शुड बी गिवन एम्प्लॉयमेंट अंडर डेली वेजेस। लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ठीक है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, राइट। नंबर टू, it also suggested for the creation of a famine fund. It also suggested for the creation of a famine fund in each province. Famine fund in each province. Famine fund in each province. Also suggested for the creation of famine fund for each province. हर province में एक famine fund होना चाहिए, right? Third point, it also suggested that the government must focus on providing irrigation facilities to the farmers. It means that irrigation facilities were inadequate. अब तक irrigation facility inadequate थी, मेरी बात समझ गया ना? So it also recommended to provide irrigation facilities to the farmers. Okay, irrigation facilities to the farmers. That's the most important point. And many other recommendations were there. ठीक है, now we have some idea. Richard Strachey Commission was a famine commission appointed under the Lytton. What is the year of this commission? This question is asked in exam. Already पूछा गया है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? Why I said that half hearted and not successful? रिकमेंडेशन देना और रिकमेंडेशन को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर देना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है. It means these recommendations were fully implemented or partially implemented. Partially implemented, right? So that is the most important point. Write this. Okay, limitation क्या है? What is the limitation here? Right, implementation part was the main weakness. Okay, recommendations were partially implemented. Implementation part was the main weakness here. Implementation part was the main weakness. Okay, recommendations were partially implemented. It means that the government was not very much sensitive on this issue. The recommendations were partially implemented, and it means that the government was not very much sensible at this issue. Government was not very much sensible at this issue. Okay, at this issue. और हम कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वाज नॉट वेरी मच सेंसिटिव? गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं थी, इट वाज इनसेंसिटिव. देयर इज एन एग्जांपल फॉर दिस, एंड दैट इज व्हाट? द गवर्नमेंट वाज इनसेंसिटिव. गवर्नमेंट इनसेंसिटिव थी, और इसका एग्जांपल है, द एग्जांपल इज राइट, ग्रैंड दरबार एट दिल्ली. ग्रैंड दरबार एट दिल्ली, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर prelims. Grand Darbar at Delhi, that was organized on 1st January 1877. But you have to remember the year only, 1877. Grand Darbar was held at Delhi, 1st January 1877. This is also known as Proclamation Darbar. इसको हम क्या कहते हैं? Proclamation Darbar भी कहते हैं. Proclamation Darbar. Why this Grand Darbar was held? Okay, so read this. British Parliament passed Royal Titles Act. British Parliament has passed an act, and that act was Royal Titles Act. British Parliament ने एक act pass किया, and the name of this act was Royal Titles Act. And read this. According to this act, now Queen Victoria was to be proclaimed
Read this. According to this act, now Queen Victoria was to be proclaimed as Queen Victoria was to be proclaimed as according to this act. Now Queen Victoria was to be proclaimed as Queen Empress of India. Was to be proclaimed as Queen Empress. Was to be proclaimed as Queen Empress of इंडिया. भारत की महारानी घोषित करना था इनको. It was to she was to be proclaimed as Queen Empress of India. That is also known as कैसर ए हिंद. इसको हम कहते हैं कैसर ए हिंद. हिंद की साम्राज्ञी, कैसर ए हिंद. So she was to be proclaimed as Queen Empress. Clear? So this darbar was held for what purpose? So what is the purpose of this darbar? Write this. The purpose was to proclaim Queen Victoria as the Empress of India. The purpose was to proclaim Queen Victoria. The purpose was to proclaim Queen Victoria as the Empress of India by the British. This was the purpose. The purpose was to proclaim Queen Victoria as the Empress of India by the British. And in this darbar, millions of rupees were spent. ठीक है? Millions of rupees were spent. On one side, what is happening? Millions of Indians are dying due to this famine. And on the other side, year क्या है? ध्यान से देखो, 1877. यही तो year है, 1877. The Grand Darbar. On one side, millions of people are dying, and on the other side, you are spending millions of rupees. What does this show? This will make Lord Lytton more unpopular among Indians. Now Indians will start hating Lord Lytton. नफरत करने लगेंगे लोग Lord Lytton से. This is an important point. So right here, right on one side, India was witnessing the horrors of famine. On one side, India was witnessing the horrors of famine, and millions of Indians were dying. Millions of Indians were dying. Okay, millions of Indians were dying, while on the other side, millions of Indians were dying, while on the other side, we see millions of rupees were spent on Grand Darbar at Delhi. On the other side, we see that millions of rupees were spent on the Grand Darbar at Delhi. This is what? Insensitive approach of government in dealing with the famine. ठीक है, बहुत सीधी सी बात है. आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते अगर आपके देश में लाखों लाखों लोगों की मौत हो रही है, राइट? इनसेंसिटिव अप्रोच ऑफ डीलिंग विद द फेमाइन्स. अच्छा, इस टाइम में क्या हो रहा है? 1876-77 कुछ याद आ रहा है आपको? आरपीएस, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस. बंगाल में कौन सा रीजनल पॉलिटिकल, इंडियन काउंसिल, वो सॉरी, इंडियन एसोसिएशन. व्हाट वाज द ईयर? इंडियन एसोसिएशन का ईयर क्या है बताओ? इंडिया लीग का ईयर क्या है? ये याद होना चाहिए. मैंने कहा जितना क्लास में पढ़ा रहा हूं उतना ही तैयार करो ना, ठीक से तैयार करो. 1875, 1876 याद आया? 1875, 1876 इंडिया लीग, 1875 इंडियन एसोसिएशन, 1876 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस. लिटन जब है तो उस समय बंगाल की दो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा एक्टिव है. वो कौन है? इंडिया लीग एंड इंडियन एसोसिएशन. शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. और जब ये तमाशा देखेंगे ये लोग तो क्या करेंगे? What will be the response of educated Indians? Now they will realize that we Indians need to be united to oppose the injustices of the colonial government. So don't you think that the policies that were adopted by government of Lytton, indirectly they provided what? A sense of oneness among Indian people. The Indian people became more awakened. लोगों की आंख खुल गई. मेरी बात समझ गया ना? और इसमें फिर से रोल इंपॉर्टेंट कौन प्ले करेगा? द RPAs, right? The educated Indians. Now they will realize that what the government is doing. So read this point. Okay, right.
this created a lot of dissatisfaction in the minds of Indian people. This created a lot of dissatisfaction in the minds of Indian people. And now this created a lot of dissatisfaction in the minds of Indian people. And now Indian people were more united. Now Indian people were more united against the injustices. Now Indian people were more united against the injustices that were promoted by the colonial government in India. Now Indians were united against the injustices that were promoted by colonial government in India. Or we can say that, or we can say that, or we can say that the policies adopted by Lytton, or we can say that the policies adopted by Lytton indirectly awakened the policies adopted by Lord Lytton indirectly awakened the nationalist tendencies in India. Indirectly awakened the nationalist tendencies in India. The policies introduced by Lytton indirectly awakened the nationalist tendencies in India. आप समझ पा रहे हो? ये दोनों प्रीलिम्स का फैक्ट था. नाउ आर यू एबल टू कोरिलेट द फैक्ट्स? ठीक है, ग्रैंड दरबार एंड दिस फेमाइन रिलीफ टॉपिक. नाउ we are coming to the next development. What is the next development? Look at the structure. We have discussed famine relief and darbar context. Clear? Financial reforms context. Now these two contexts, VPA, Vernacular Press Act and Arms Act 1878. अब इस context को देखते हैं. Vernacular Press Act and Arms Act 1878. Again, these two are the most important topics. One is VPA 1878 and the second is Arms Act 1878. Arms Act 1878. And this is Lytton. The time period of Lytton is 1876 to 1880. Now, what does this VPA do? VPA will do vernacular languages. देखो, vernacular languages were promoting what? Vernacular languages की reach ज़्यादा होती है, ठीक है? आज के टाइम में भी reach ज़्यादा होती है, ये बात ध्यान से समझो. Today also the reach of vernacular languages is very high. And अभी क्या है? This is the second half of 19th century, right? Today also मैं देखता हूँ कि when I will start posting videos in Hindi, जैसे ही मैं हिंदी में प्रमोट करना शुरू करूँगा, so there are larger audiences in Hindi, ठीक है? On YouTube also. तो YouTube पे पॉपुलर होने का तरीका क्या है? हिंदी. इंग्लिश में तो पढ़ने वाले बच्चे आएंगे जो कम है, ठीक है? हिंदी में सब लोग सुनते हैं, ठीक है? तो रीच ऑफ वर्नाक्युलर्स क्या है? ज़्यादा है. तो रीच ऑफ वर्नाक्युलर वॉज वेरी हाई एट दैट टाइम ऑल्सो. Got it? And what was happening? These vernaculars were promoting dissatisfaction against the British Raj. ग्रैंड दरबार हुआ, ग्रैंड दरबार में पैसा खर्च हुआ, पूरी दुनिया ने देखा. इस बात को वर्नाक्युलर्स में लिखोगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं? पहुंचेगा ना. बात ये, इस बात को समझना है. नाउ लिटन वाज वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट that the vernaculars are promoting a kind of anti-British consciousness among the Indian people. Clear? ये बात वो जानता था. So read this. Lord Lytton was well aware of the fact that Lord Lytton was well aware of the fact that vernaculars were promoting anti-British sentiments. They were promoting anti-British sentiments among Indians. Lord Lytton was well aware of this fact that vernaculars were promoting anti-British sentiments among Indians, right? They were promoting anti-British sentiment among the Indians. The second point is what? Okay, it means they are promoting what? They are helping in the growth of Indian nationalism. ये बात वो जानता था. Promoting anti-British sentiments means what? Growth of Indian nationalism. And Lytton was knowing this. Clear? And that's why, okay, VPA was introduced in the year 1878. Vernacular Press Act was introduced in the year 1878. इसीलिए Vernacular Press Act
लाया गया 1878। अब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि दिस एक्ट विल एम्पावर द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को ये अधिकार मिल जाएगा, ध्यान से समझना। मजिस्ट्रेट जितने भी वर्नाक्युलर लिटरेचर से जुड़े हुए प्रेस वाले लोग, ओके, मजिस्ट्रेट विल कॉल each and every person who is related with this vernacular press. All will come, okay, and they will sign an affidavit before the magistrate that they will not publish anything that will promote anti-British sentiment. ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई. Now what magistrate will do? If so, for example, if you have committed one offense, clear, so one offense will be excused, but at the second time when you will be committing the same offense, you will be punished. ठीक है ना? And the second time when you will be punished, you cannot make an appeal in any Indian court against the decisions of this magistrate. इस मजिस्ट्रेट के डिसीजंस के खिलाफ आप किसी भी सुपीरियर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते. मजिस्ट्रेट जो पनिशमेंट आपको सुना देगा वो क्या होगा? फाइनल होगा. ये कितना स्ट्रिक्ट रूल है, आप समझ पा रहे हो? यू कैन नॉट मेक एन अपील, द राइट टू अपील वाज आल्सो टेकन अवे. ठीक है, मजिस्ट्रेट विल पनिश यू, यू विल हैव टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट. एंड इन दिस वे व्हाट लिटन डिड, he tried to suppress the nationalist sentiments among the Indian people, and Indians will be highly dissatisfied. Indian लोग इससे बहुत नाराज होंगे. ठीक है, बिकॉज ये राइट इंडियंस को वीक करता है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? कर्ब कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. ये हो रहा है. मेरी बात समझ गया ना? ये पूरा का पूरा था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट. इस बात को सिंपल तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? राइट दिस दैट okay, the vernaculars were put under strict supervision, and vernaculars were put under strict supervision, and right, any vernacular literature any vernacular literature that will promote anti-British sentiments, okay, will be banned, restricted. Any vernacular literature that will promote anti-British sentiments will be banned, will be restricted. Okay, any vernacular literature that will promote anti-British sentiments will be banned, will be restricted. उसको बैन किया जाएगा, that will be restricted. Okay, and read this. हाँ, इतना ही लिखो, पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट ना? That magistrate will give punishment and you cannot make an appeal to any court against this punishment. Okay, this is the main idea. Now what is the Indian Arms Act? Arms Act 1878. Yes, please ask. उस टाइम में, हाँ यही बता रहा हूँ आपको, उस टाइम में क्या था कि मजिस्ट्रेट के पास भी जुडिशियल पावर्स थी. आज भी है. कुछ स्टेट्स में जो एसडीएम है उनके पास जुडिशियल पावर्स है. ठीक है ना, ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो वो उसी समय से चीजें चली आ रही. तो मजिस्ट्रेट के पास जुडिशियल पावर्स था, और ये भी एक नेशनल मूवमेंट का मुद्दा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स ये भी करने की जरूरत थी. दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इशू. आर्म्स एक्ट का मुद्दा क्या है, समझो इस बात को. बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया देयर वर लोकल रूलर्स. मराठास थे, देयर वर लोकल स्टेट्स, राइट. द स्टेट्स वर मेकिंग वेपन्स. ठीक है, एंड इंडियंस कुड पॉसेस वेपन्स. ठीक है, ऐसा कोई लॉ वगैरह था क्या हमारे यहाँ? कोई लॉ नहीं था. ऑल इंडिया के लिए कोई रूल था आर्म्स एक्ट का? नहीं. मराठास ने अपनी बंदूक बना ली. ठीक है, हैदराबाद टीपू सुल्तान वाले अपना अलग हथियार बनाए पड़े हैं. मेरी बात समझ गया ना? देयर वाज नो एनी यूनिफाइड लॉ रिगार्डिंग आर्म्स. ठीक है, जिसके अंदर स्किल था, हुनर था बंदूक बनाने का, वो बंदूक बनाएगा, अपने पास रखेगा, मौका पड़ेगा तो चलाएगा भी बंदूक को. ऐसा सिस्टम था. अब इस सिस्टम से खतरा किसको था? ब्रिटिश को. Because when anti-British sentiments will be promoted and if Indian people will have firearms, तो गुस्से में क्या होगा? ठीक है, यूज कर ही लेंगे किसी दिन. Now Indians will, now the British will do what? For this, देखो, sentiments against British people were growing. 1857 revolt is an example of this. Growth of nationalism का मतलब ही है कि anti-British sentiments were becoming popular.
Now in this case again Lord Lytton will bring what? Arms Act. And this Arms Act will do what? Okay, Arms Act से नियम ये आएगा कि if you want to purchase, if you want to possess firearms, you need to take license. आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है. आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है ना, ये तभी से चला आ रहा है, लाइसेंस लेने की जरूरत है. डायरेक्ट पॉलिसी में क्या कहा गया? ये नहीं कहा गया कि इंडियंस को गन रखने की परमिशन नहीं दी जाएगी, कहा आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. और लाइसेंस कौन देगा? हु विल गिव लाइसेंस? ब्रिटिश. और लाइसेंस देने में क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन. लाइसेंस विल बी इशूड ओनली टू द इंग्लिश, इंडियंस विल नॉट बी गिवन लाइसेंस. तो व्हाट हैपेंड? इंडियंस वर फॉरबिडन टू कीप फायर आर्म्स. एक तरह से मना कर दिया. ठीक है, तो नियम कानून का बहाना लेके इंडियंस को मना कर दिया. ये था इंडियन आर्म्स एक्ट. इससे तो लोगों को गुस्सा आ जाएगा क्योंकि आप इंडियंस को कमजोर कर रहे हो, यूरोपियंस को फायर. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. या आपने ब्रिटिश पीपल तो फायर आर्म्स रख रहा है, इंडियंस नहीं रख रहा है ना. इंटरेस्टिंग. गुस्सा तो आएगा ना लोगों को. ठीक है, सो राइट दिस पॉइंट, आर्म्स एक्ट 1878. राइट दिस provision. What was the provision in this Arms Act 1878? Right. Okay. Right. Arms without license, possessing arms without license will be considered as a criminal offense. Possessing arms without license will be considered as a criminal offense. It means license was compulsory now. Possessing arms without license will be a criminal offense. It means license was compulsory now. Now on one side there is English people and on other side there is Indian people. Okay, so write this. English people could easily get license. English people could easily get license. English people could easily get license, but the Indians could not easily get license. But the Indians could not easily get license. English people could easily get license, but the Indians could not easily get license. Okay, this is what? ये क्या है? Racial discrimination. This is an example of what? A racial discrimination. ये discrimination का example. Okay, English could easily get the license, but the Indians not. Okay, so that is one point. This is an example of racial discrimination. Got it? ये बात आपको समझ में आई? This is an example of racial discrimination. Now we are coming to the next part. अब आप समझ गए? कॉन्सेप्ट मैंने रिलेट कर दिया. एंटी ब्रिटिश sentiments were growing, so it's you can say that in the interest of the British will be more safe, more protected if Indians will not get firearms. So this was done intentionally, जानबूझ के किया गया. This was a kind of colonial discrimination. Now I hope this part is also clear. Okay, this part is also clear. We have covered these two topics also. Now the next is civil services reforms and Lytton. Read this part. Civil services reforms and Lytton. Civil services reforms and Lytton. We need to understand this. Civil services reforms and Lytton. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. पूरा सिविल सर्विसेज अलग से पढ़ाऊंगा, बट आई एम जस्ट गिविंग अ फ्यू रेफरेंसेस जो आपको समझने की जरूरत है. ठीक है, व्हाट इज द रेफरेंस? ओके, तो देखो सिविल सर्विसेज, जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, इंपीरियल सर्विसेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे यू विल फाइंड टू वर्ड्स. वन वाज कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विसेज एंड द सेकंड वाज unconvenanted civil services. Write this. One is convenanted civil services. Convenanted civil services. This is one word. Convenanted civil services. And the second was unconvenanted civil services. Unconvenanted civil services. Unconvenanted civil services. And this division was made, okay, on the basis of nature of work, पे स्केल एंड अपॉइंटमेंट्स. ठीक है ना? दिस डिवीजन वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ पे स्केल एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ अपॉइंटमेंट्स वेर मेड. अपॉइंटमेंट किस तरह से हो रहा है, इस बेसिस पे ये डिवीजन किया गया था. दिस इज द बेसिस ऑफ डिवीजन, नेचर ऑफ वर्क, पे स्केल एंड अपॉइंटमेंट्स.
right? All the high posts in the government will come under convenanted civil services. All the high post or offices in the government will come under convenanted civil services. जितने भी हाई पोस्ट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाई पोस्ट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज हाई पोस्ट हो गया, सो दे ऑल विल कम अंडर कन्वीनेंटेड सर्विसेज. एंड read this, lower administration or subordinate offices, lower administration or subordinate offices were the part of unconvenanted civil services. Lower offices or subordinate offices were the part of unconvenanted civil services. मेरी बात समझ गए? Write some facts also. Read this. Warren Hastings, okay, laid the foundation of civil services. Very important fact. Read this. Warren Hastings लिख लो अगले पेज में. Warren Hastings led the foundation of civil services. Civil services की नींव इसी ने रखी थी, Warren Hastings ने. Led the foundation of civil services. Okay. The next important fact. Read this. Cornwallis. Warren Hastings led the foundation of civil services. Right. Cornwallis reformed it. Cornwallis introduced reforms in it. Cornwallis modernized civil services. Cornwallis ने क्या किया? Modernize किया. Cornwallis did what? Okay. Cornwallis also made the civil services more rational. ठीक है. Eliminated corruption. Corruption को दूर करने की कोशिश की. मतलब Clive bring reforms in civil services, made it well structured. Clive ने क्या किया था? Well structured बनाया था. Okay. And that is why Clive is also known as father of civil services. Sorry, Clive नहीं, Cornwallis, sorry. Cornwallis was known as father of civil services in India. So after Warren Hastings, Cornwallis reformed it, Cornwallis modernized it, Cornwallis rationalized it, Cornwallis, okay, made it more well structured, elaborate, efficient. ठीक है, Cornwallis made it more efficient, and in this way Cornwallis was also known as father of civil services in India. Cornwallis को क्या कहते हैं? Father of civil services in India. Cornwallis कब से कब तक था पता ही है आपको? 1786 to 1793. अब इसके बाद देखो क्या होगा. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, 1833 चार्टर. 1833 चार्टर. जितने पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो तो शायद ये बात समझ भी रहे हो. 1833 चार्टर क्या कहता है? चार्टर, read this. Okay, 1833 charter. What does this charter says? Right, the charter says that, read this, the charter says that, okay, the services will be open to all on the basis of merit. The services will be open to all on the basis of merit. ये बात 1833 के चार्टर में कही गई थी. राइट, ओके, देयर विल बी नो एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दिस. ठीक है ना? द सर्विसेज विल बी ओपन टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. देयर विल बी नो एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन कैसे ये रोका जाएगा ये बात नहीं बताया गया था. माहौल बनाने के लिए कह दिया गया था कि द सर्विसेज विल बी ओपन टू ऑल. ठीक है ना? राइट, नेक्स्ट पॉइंट, 1854. 1854. 1854. Right. Okay. Civil Service Commission was set up in India. Civil Service Commission was set up in India. Civil Services Commission was set up in India. Civil Services Commission was set up in India. What about the syllabus? कल बता चुका हूँ आपको. Civil Services Commission was set up in India. Syllabus में क्या था? Read this. Okay. AMC of ब्रिटेन पढ़ना था आपको. ठीक है ना? Read this. Classic literature, classic history, classic literature, classic history of Britain. This formed the major part of syllabus. ये था major part of syllabus. This formed the major part of syllabus. मतलब उन्होंने एग्जाम को क्या किया था? डिफिकल्ट बना रखा था. This formed the major part of syllabus. लेकिन इंडियंस तो इंडियंस है, पता ही आपको. ओके, तो यहाँ क्या होता है? 1864. राइट, सिलेबस इतना डिफिकल्ट था फिर भी. राइट, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ही वॉज द ब्रदर ऑफ आर एन टैगोर. ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर. राइट, द सत्येंद्र नाथ टैगोर
This is also a prelims question, right? 1864, Satyendra Nath Tagore, who was the brother of Rabindranath Tagore, Satyendra Nath Tagore, who was the brother of Rabindranath Tagore, cleared this examination. इस एग्जाम को क्लियर कर लिया उन्होंने, ठीक है. He cleared this examination. Satyendra Nath Tagore, the brother of R.N. Tagore, cleared this examination. Got it? Cleared this examination. Okay. Now, the next important point. Okay. अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? We are reading about Lytton, Lytton and Civil Services. तो लिटन का टाइम पीरियड क्या है? बार बार ये स्ट्रक्चर बनाओ तो आप फैक्ट्स को याद कर पाओगे. 1876 टू 1880. और यहाँ पे क्या होता है? रेड दिस 1879. 1879 क्या है? 1879 में रेड दिस 1879 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट. ब्रिटिश पार्लियामेंट, अच्छा 1879, यहाँ बस इतना लिख लो, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज. स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज 1879 स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज. ठीक है ना? 1879 statutory civil services. Okay, now we have to discuss this issue, statutory civil services. Okay, okay, so what happened here? Okay, देखो statutory civil services. Before I discuss this point, write a few important points so that you could understand the mentality of Lytton. Write this. Lytton, right? Lytton, okay, recommended the British government. Lytton proposed the British government to close the entry of Indians in convenanted services. Lytton proposed the British government. Lytton proposed the British government to close the entry of Indians in convenanted services. Entry of Indians in convenanted services. समझ पा रहे हो? He is proposing the government. एक लोग एग्जाम क्लियर कर चुके थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, and he is asking the government to close the entry of Indians in convenanted services. क्या होगा अगर इंडियंस एंटर करेंगे? दिस विल मोटिवेट एंड इनकरेज अदर इंडियंस ऑल्सो. ठीक है, जैसे आज भी देखो किसी गांव में किसी गरीब परिवार का बच्चा अगर आईएएस बन जाता है तो इट इनकरेजेस thousands of other families कि हमारा बेटा भी बड़ा अफसर बन सकता है. द सेम हैपेंस. तो ये मोटिवेशन क्या करेगा? लोगों को एनकरेज करेगा. इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी. सो ही इज प्रपोजिंग द गवर्नमेंट दैट स्टॉप द एंट्री ऑफ राइट इंडियंस इन द convenant services. Okay, right? Next point. Okay, next point, what he did, right? Another recommendation. Another recommendation. Okay, and that is, okay, a recommendation related to statutory civil services. A recommendation related to statutory civil services, and it was applied also. A recommendation related to statutory civil services and it was applied also. Lytton ने recommend किया statutory civil services के लिए and this was applied also. ठीक है, ये apply भी किया गया. Okay, but this was not successful. Read this. This was not successful in India. ये इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रह पाया statutory civil services. अब ये क्या है? The idea of statutory civil services. Okay, this I am going to discuss with you. Idea of statutory civil services. Statutory जब हम कहते हैं तो it simply means what? Okay, through a legislation by parliament. यही मतलब होता है ना? Okay, तो देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज प्रीवियसली पास्ड एन एक्ट इन 1870. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहले से ही एक लेजिस्लेटिव एक्ट पास किया था. ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज प्रीवियसली पास्ड अ लेजिस्लेटिव एक्ट इन 1870. ठीक है, and this act, read this, this act authorized any Indian to any office, any Indian to any office, any office means civil services office. Okay, any Indian, any office without the reference to act of 1861. Any Indian, any office, any Indian
any office, any office without the reference of, without the reference of एक्ट ऑफ 1861। और ये जो रेफरेंस ऑफ एक्ट ऑफ 1861 था, दिस वाज रिलेटेड टू कॉन्वेनेंटेड सर्विसेज, कॉन्वेनेंटेड सर्विसेज, ये इससे जुड़ा हुआ मामला था। आज लेटरल एंट्री चर्चा में है। लेटरल एंट्री क्या है? व्हाट इज लेटरल एंट्री? मैं ये टॉपिक डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं? यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज लेटर एग्जैक्टली ये लेटरल एंट्री जैसा ही है। लेटरल एंट्री में क्या होगा? जैसे मान लो कि आप आईएएस हो, ठीक है, कम एज में आईएएस बन गए, आप आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, गवर्नर, ईसीआई कहीं भी पहुंच सकते हो, ठीक है ना, किसी भी पद पे जा सकते हो। लेटरल एंट्री का मतलब क्या है? इफ द गवर्नमेंट फाइंड्स यू फिट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, जहां पे आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने के बाद, एग्जाम देने के बाद 15-18 साल बाद जहां पहुंचोगे, वहां डायरेक्ट किसी को अपॉइंट कर सकती है। ये है लेटरल एंट्री। मेरी बात समझ गया ना? ओके। यहां पे क्या है? ये वैसा ही कुछ है। 1861 एक्ट इज रिलेटेड टू कॉन्वेनेंटेड सर्विसेज, ओके, हाई ऑफिसेज इन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्वेंट्स। और ये गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन क्या कह रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, एनी इंडियन, एनी ऑफिस, उसको दिया जा सकता है। लिटन ने क्या कहा? यही वाला प्लान हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। एंड फाइनली दिस लेजिस्लेशन of British Parliament was enacted in India in the form of statutory civil services 1879 at the time of Lord Lytton। तो यही चीज इंट्रोड्यूस्ड हो गई किस नाम से? स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज 1879। तो ये किसके टाइम में? लिटन के टाइम में। तो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन किसका है? लिटन का है। एंड व्हाट इज दिस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। This was government's plan. This was government of India's plan. Right? This was government of India's plan. Okay. To employ some aristocratic Indians or educated Indians. To employ some aristocratic Indians. To employ some aristocratic Indians or educated Indians. Aristocratic Indians or educated Indians. This was the government of India's plan to employ some aristocratic Indians or educated Indians, okay, in statutory civil services। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? Statutory civil services, मतलब सिविल सर्विस वाली ही पोस्ट है। They will be employed, right, on the basis of recommendation of provincial government, on the basis of recommendation of provincial government। प्रोविंशियल गवर्नमेंट नेम रेकमेंड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ओके। एंड राइट दिस, फाइनल अप्रूवल विल बी मेड बाय, फाइनल अप्रूवल विल बी मेड बाय SOS फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फाइनल अप्रूवल विल बी मेड बाय SOS फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस पॉलिसी के मतलब को आपको समझना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल रेफर सम नेम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रेफर किया तेजस्विनी का नाम, यशस्विनी का नाम, दैट सी विल बी द, इनका नाम भेजा। क्यों प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपका नाम भेजेगी और आपके नाम को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्यों अप्रूव करेगा? तभी आपका नाम भेजा जाएगा व्हेन यू विल बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और जैसे ये न्यूज फैलेगा कि यशस्विनी, ठीक है, लेटरल एंट्री जैसी चीज है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नेम रेकमेंड किया था, एसओएस ने अप्रूव कर दिया, तो सिविल सर्विसेज में कौन आएगा? आम आदमी आएगा कि एजुकेटेड इंडियंस आएंगे? एजुकेटेड इंडियंस। तो एजुकेटेड इंडियंस का आउटलुक अप्रोच अभी क्या हो गया था 1857 के बाद? एंटी ब्रिटिश। तो वो अप्रोच क्या होने लगेगा? प्रो ब्रिटिश, ओके। सो दिस वाज व्हाट? अ काइंड ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। एजुकेटेड इंडियंस के भी दो क्लास बन जाएंगे। वो लोग जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के माध्यम से, वो गवर्नमेंट की जी हुजूरी करने लगेंगे। मेरी बात समझ गया ना? देखो कितने स्मार्ट थे अंग्रेज। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस का प्रोविजन लाया कि किसी भी इंडियन को कोई भी ऑफिस दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, एसओएस अप्रूव करेगा। ऑब्वियसली who will be given opportunity? Those who will be the vocal supporter of presence of British rule in India,
अपॉर्चुनिटी हमेशा उनको मिलेगी जो भारत में ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते हैं. गॉट इट? दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव that we will give, right? This, right? Who will get opportunity? Who will get opportunity? Those Indians will get opportunity, right? This, those Indians will get opportunity. Those Indians will get opportunity who support the permanent presence of British rule in India. Okay, who support the permanent presence of British rule in India, or we can say that those who will promote pro-British sentiments, not anti-British sentiments. समझ गया ना? Those who will promote pro-British sentiments will get the opportunity. लेटरल एंट्री का विरोध करने वालों का एक सबसे बड़ा तर्क क्या है बताओ? यही तो है, ठीक है, कि गवर्नमेंट केवल उन लोगों को फिट करेगी जो प्रो गवर्नमेंट अप्रोच रखते हैं. मेरी बात समझ गया ना? ये चीज है. तो यहाँ पे तो वही होगा ना. द सेम विल हैपन हियर. नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट? द सेकंड पॉइंट, राइट? Lytton also recommended that, right? Lytton also recommended that. Lytton also recommended that the number of such appointments should not exceed. The number of such appointments should not exceed one sixth of the total number of convenanted civil services seats, right? It should not exceed, okay, more than one-sixth of the total number of convenanted civil services seats. 1/6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसका मतलब इनको हायर ऑफिसेस तो देनी है, बट अभी भी डोमिनेंस किसका बना रहेगा? यूरोपियंस का ही बना रहेगा. मेरी बात समझ गया ना? जैसे अगर टोटल सीट सपोज एग्जांपल 120 है, तो सच काइंड ऑफ नंबर्स विल नॉट बी मोर देन 1/6. 20 से ज्यादा ऐसे इंडियंस नहीं हो सकते. यानी डोमिनेंस हमेशा किसका बना रहेगा? यूरोपियंस का बना रहेगा. ओके, दिस इज व्हाट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, ओके, दैट statutory civil service will not have the same status and same salary like the convenanted services. This is what? Racial discrimination. Statutory services will not have the same status and salary, will not have the same status and salary, same status and salary like the convenanted services, same status and salary like the convenanted services. इसके बाद एक और मजेदार बात, ये मैसेज दे रहे थे लोगों को, देखो हम आपको सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट ले रहे हैं, बिना एग्जाम के ले रहे हैं. लिटन ने क्या किया? अब वो पॉइंट पहले भी आपको बता चुका हूं. लिटन सजेस्टेड टू रिड्यूस द एज, मैक्सिमम एज टू इंटर इनटू द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज फ्रॉम, किस सर्विसेज की बात कर रहा था वो? स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज. कितना होना चाहिए? 21 to 19. अब एक बात ध्यान से समझना, स्टैट्यूटरी सर्विसेज में 19 ईयर्स में अगर आपको इन कर जाना है तो आपको ब्रिटिश कल्चर, लिटरेचर सबकी जानकारी होनी चाहिए. उसके लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आप इंडिया में रह के वो एजुकेशन हासिल करोगे तो हो पाएगा, कि अगर ब्रिटेन जाओगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ पाओगे. ब्रिटेन जाना पड़ेगा. इसका मतलब था कि जो रॉयल क्लास है, जैसे राजा महाराजा के बच्चे हैं, अगर वो सिविल सर्विस में आना चाहें तो वो ब्रिटेन जाके एजुकेशन लेंगे. ध्यान से समझना, जो वेल्दी क्लास ऑफ इंडियंस है वो अपने बच्चों को अगर सिविल सर्विसेज में भेजना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए वो कहाँ भेजेंगे? ब्रिटेन. अब जब वो ब्रिटेन से वापस आएगा तो एंग्लिसाइज होके आएगा ना. ध्यान से समझना, तो दिखने में तो वो इंडियन होगा, बट किसको सपोर्ट करेगा? इस वजह से 19 ईयर्स में अगर आपको क्लियर करना है तो ज्यादा चांसेस है कि आप ब्रिटेन जाओ. ब्रिटेन जाओगे तो एंग्लिसाइज होकर वापस आओगे. ठीक है, और यही तो पॉलिसी थी. अब आप समझ रहे हो कि हॉरर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म क्या है, कैसे प्लान बनाया कि इंडिया में परमानेंट प्रेजेंस बनाए रखनी है. ओके, दिस इज द पॉइंट, राइट? वन मोर पॉइंट, राइट? दिस लिटन आल्सो रिकमेंडेड दैट, Lytton also recommended that in statutory civil services, maximum age to appear was, in statutory civil services, maximum age to appear was reduced from 21 to 19 years. Maximum age to appear was reduced from 21 to 19 years. Maximum age was reduced.
उसको रिड्यूस कर दिया गया। अब पर्पस क्या है? इफ आई आस्क यू इन 2 or 3 पॉइंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट यू विल से व्हाट? ओके, divide and rule. The purpose was to divide the class of Indian intellectuals, educated class, into two parts. Okay, those who are pro-British will get the chances to serve statutory civil services. Got it? Why maximum age is reduced? Okay, the purpose is what? Exam was conducted in London, तो बच्चा लंदन में ही रह के तैयारी कर ले, ज्यादा बेटर है, राइट? इट विल एंग्लिसाइज इंडियन पीपल, ये इंडियन पीपल को क्या करेगा? एंग्लिसाइज करेगा। It will promote a kind of westernization, ठीक है ना? And this will support the presence of British rule in India. So all this was done very intentionally. ये सब कुछ बहुत ही intensely किया जा रहा था. Now the next reference, ये भी prelims में पूछा गया है. This question has also been asked in your prelims exam, and that is, आ जाओ, अगला reference क्या है? We have discussed every topic here, whatever I have written here. The last is Second Anglo-Afghan War and Lytton, ठीक है? तो बस इसको थोड़ा सा रिलेट कर देना है, ठीक है ना, कि क्या इशू है. सो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर एंड लिटन, राइट दिस. द नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर एंड लिटन. ओके, सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर. हियर द वॉर ईयर्स यू मस्ट रिमेंबर, वॉर ईयर्स यू मस्ट रिमेंबर, ये एग्जाम में पूछा जाता है. जैसे सेकेंड है तो फर्स्ट भी रहा होगा, राइट? तो देखो, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर यहां लिख दे रहा हूं, 1838-39 से लेकर 42 तक था. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो अफगान वॉर. ओके, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर. सो दिस वाज फॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड 1878 टू 1880, 1880, ठीक है. सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 टू 1880. और लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या है? 1876 टू 1880. तो एक पॉपुलर फॉर्मेट है प्रीलिम्स क्वेश्चन का कि दे विल आस्क लाइक दिस, व्हेन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वाज फॉट, व्हाट मैसूर वॉर वाज फॉट, गवर्नर जनरल कौन था, सेकंड में कौन था, थर्ड में कौन था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम कौन था, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम कौन था, राइट? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम कौन था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के टाइम कौन था, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के टाइम कौन था. तो जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं उस समय कौन गवर्नर जनरल या वायसराय रहा है, तो इसको क्या कर लेना है, एक बार लिस्टिंग कर लेनी है. गॉट इट? व्हेन यू विल रीड इट 1 or 2 times you will be comfortable. This is one of the most popular format of questions in exam, ठीक है ना? तो देखो, क्यों ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपको बता दे रहा हूँ. वॉर में डिटेल्स में नहीं ले जा रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझो. ऑलरेडी देयर वाज अ ग्रेट फैमिन, एक ग्रेट फैमिन है. व्हाट इज द टाइम पीरियड? 1876 टू 1878. ग्रेट फैमिन है. दो तीन चीजों से रिलेट करो, आप समझ जाओगे. ग्रेट फैमिन, ग्रेट फैमिन से क्या होगा? मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल वेयर डाइंग, मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल वेयर डाइंग. इस बीच में लिटन ने क्या किया? दूसरा धमाका किया 1877. मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल वेयर डाइंग एंड ऑन ग्रेट दरबार इन दिल्ली मिलियंस ऑफ रुपीज वेयर स्पेंट. मेरी बात समझ गए? जहां पर आपका पूरा का पूरा फोकस हो जाना चाहिए किस बात को लेके? प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ टू द इंडियन पीपल. उनको हेल्प मिलनी चाहिए ना एट द टाइम ऑफ फेमाइन, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस. तो आपका फोकस, गवर्नमेंट का फोकस कहां डाइवर्टेड है? ग्रेट दरबार. दूसरा क्या है? एट द सेम टाइम यू हैव स्टार्टेड अ वॉर, दैट इज एंग्लो अफगान वॉर. और इस वॉर को इनिशिएट किसने किया है? दिस वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड लिटन हिमसेल्फ. देखो, यानी जिस समय आपका फोकस रहना चाहिए टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ फेमाइन, you have initiated a war by yourself, and this war was a senseless war. This war was a senseless war. Why senseless war? Because here Lord Lytton want to develop, okay, Afghanistan as a buffer against any future Russian invasion, and for this purpose he wanted to just maintain a resident in Afghan's Amir's court, and for that, for this purpose, maintain influence in the Afghan Supreme Court, he is fighting a war with them. ठीक है ना? But at this juncture, where India was suffering with so many challenges, if you are doing this, this is not commendable. ये commendable
नहीं है। योर आइडिया इज ग्रेट, इसके लिए आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। दैट लिटन वॉज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर हु फर्स्ट ड्रीम्ड ऑफ फॉर्मिंग अ सेपरेट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये पहला ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है जो सोचता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाना है इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, एंड इन दिस वे this entire area will be under the control of central government, and this entire area will prevent the future Russian invasion. Your idea is great, but the time when you are trying to implement this idea, it's showing that you are a ruthless administrator, you are cruel, you are not sensitive to the needs of the Indian people. Okay, so the Indian people will oppose what? Anglo-Afghan war. इंडियन पीपल इस बात को अपोज करेंगे, एंड दे विल आल्सो डिमांड मिलिट्री एक्सपेंडिचर कट। याद आया, पहले ये पॉइंट बता चुका हूं, कहा कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर कट करो भाई, वो पैसा खर्च करने की जरूरत है कहां? रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स पे, एंड दैट वाज एन इंपॉर्टेंट डिमांड रेज्ड बाय द रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस। एक्सपेंडिचर कट। इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इट विल बी formed in 1885, after this Indian National Congress will demand military expenditure cut. अब समझ गया ना कि इस वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस वॉर, राइट दिस, ड्यू टू दिस वॉर, राइट दिस, मिलिट्री एक्सपेंसेस, मिलिट्री एक्सपेंसेस, मिलिट्री एक्सपेंसेस, राइट. On one side, India was suffering from great challenges. On other side, Lytton started a senseless war. On one side, India was suffering from great challenges. Okay. On one side, India was suffering from great challenges, and Lytton started a senseless war. On one side, India was suffering from great challenges, and Lytton started a senseless war. Lytton next senseless war start kar di. Got it? Now the Indian people opposed this war. They demanded a military expenditure cut. The Indian people opposed this war. They demanded a military expenditure cut. They demanded a military expenditure cut. Okay. They demanded a military expenditure cut. Okay. Right. RPS will demand that. RPS will demand that. RPS will demand that the government must focus. RPS will demand that the government should focus. RPS will demand that the government should focus. The government should focus, right, on the promotion of welfare work, humanitarian relief, welfare work, humanitarian relief, instead of promoting aggression on neighboring countries. Instead of promoting aggression on neighboring countries. Instead of promoting aggression on neighboring countries. Okay. Promoting aggression on neighboring countries. Got it? Now, conclusion. What is the conclusion? Okay. Right. Conclusion. Read this. Undoubtedly, Lytton was a man of ideas. Undoubtedly, Lytton was a man of ideas, but his regime in India is considered as, but his rule or his reign or his regime in India is considered as a period of repression and oppression. His regime in India was considered as a period of repression and oppression. A period of repression and oppression. Okay. उसका regime क्या था? It was a period of repression and oppression. Right, next point. Okay. His main focus was on promoting British interests in India. His main focus was on the promotion of British interests in India. His main focus was on the promotion of British interests in India and maintaining the colonial structure permanent in India. And maintaining the colonial structure permanent in India. Maintaining the colonial structure permanent in India. But the Indian history judges Lytton as a failed
in failed administrator in India. But the Indian history always judges Lytton as a failed administrator in India. Always judges Lytton as a failed administrator in India. Got it? Lytton will always be judged as a failed administrator in India. समझ में आया आपको? सिंपल सा फंडा है क्या कि इन दिस पीरियड 1857 58 टू 1885 क्या हो रहा था? ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, और लिटन उसको क्या करना चाह रहा था? सप्रेस करना चाहता था। नाउ सपोज आई गिव यू अ क्वेश्चन टू राइट दैट डिस्कस द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ लिटन इन इंडिया, ओके, during this time period 1876 to 1880, or write an evaluation of the Lytton's work in India during 1876 to 1880 time period. And if I ask you to write in 150 words, that is the most challenging part. अब आप 150 वर्ड में भी आंसर लिख सकते हो. Once you understand the holistic idea, now you can write answer in 150 वर्ड. पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है. लिटन का टाइम पीरियड लिखो, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, ठीक है, एंड राइट दिस लिटन टाइम पीरियड 1876 टू 1880. स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. क्या बताया फिर आपने? एक इंट्रोडक्शन लिखो. ओके, लिटन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 1876 टू 1880 and this was the age of growth of national consciousness in India. Got it? Now you will write in main body what? Main body में क्या लिखोगे? Core points. Core points क्या है? Important works of Lytton in India. Explanation में नहीं जाना है. क्या लिखोगे? Point 1 2 3 4. Okay, reforms in financial system of administration. वहां क्या कर दोगे? एरो मार्क देके बता दोगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ओके, रेवेन्यू रिलेटेड रिफॉर्म्स, ओके, सॉल्ट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स. केवल कोर वर्ड. सब देखो कितना आसानी से आपको रिकॉल हो रहा है. अगर आप यही पहले ही कंसाइज नोट्स पढ़ोगे तो आप याद नहीं रख पाओगे उसको. कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी रिलेटेड, ओके, प्रोविजंस, ये आपने लिखा. फिर आपने दूसरे पॉइंट पे आए, तीसरे पॉइंट पे आए, चौथे पॉइंट पे आए, एंड इन लास्ट पार्ट कंक्लूजन पार्ट यू विल राइट एन कंक्लूजन, जहां पे आप उसकी पर्सनालिटी का एक एस्टिमेशन लिख दोगे. ठीक है ना? राइट, जो मैंने आपको लास्ट में बताया. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर्स. किसी भी आंसर का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है. ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल राइट आंसर इन हिज ओन वे, but how you are going to write your answer using sketches and diagrams is one of the most important thing. Evaluation you will be able to do when you will understand the work. जब उसके काम को पढ़ोगे तब तो उसकी पर्सनालिटी को इवेलुएट कर पाओगे, राइट? So this is the idea. So you will try to write the answer of this question. Write this, okay? Write a question. Question is right. Uh, Write a critical evaluation. Write a critical evaluation about the works of Lytton in India. Write a critical evaluation about the works of Lytton in India during 1876 to 1880 period. Right? Critical evaluation of the works of Lytton in India during 1876 to 1880 period. Critical evaluation of the works of Lytton. क्रिटिकल इवैल्यूएशन में क्या करना होता है? जैसे आपने एक बात बताई, फाइनेंशियल कंडीशंस को इंप्रूव करने वाला पॉइंट, और बताया कि इससे किसको फायदा हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. रेवेन्यूज इंक्रीज हुए. ठीक है. फिर आपने दूसरा पॉइंट बताया, वो क्या बताया? फेमाइन रिलीफ. ठीक है. आप बताओगे कि हाँ, ओके, कमीशन वाज अपॉइंटेड, कमीशन गिव रिकमेंडेशन, बट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वाज वीकर, गवर्नमेंट वाज नॉट सेंसिटिव. फिर बता दोगे ग्रैंड फेमाइन वाला इशू. और यहीं पे चाहो तो आप रिलेट कर सकते हो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर. गॉट इट? That on one side what we see that there is great famine, and on the other side what is happening? A war started, that is Anglo-Afghan war. This shows the insensitiveness of the government, military expenditure. फिर थर्ड पार्ट पॉइंट क्या बताओगे? Efforts to counter the growth of nationalism, जिसमें क्या आ जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ जाएगा, राइट? आर्म्स एक्ट आ जाएगा. दिस विल कम. ठीक है ना? और उसके बाद क्या था? एक और पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, that is the recommendation that the Indians should not be given entry into the convenanted civil services. ठीक है. स्टैट्यूटरी भी 1/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है ना? एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का रिफ्लेक्शन क्या हो गया? Statutory civil services. Okay, that elite Indians will get a chance to join the civil services
provincial governments will recommend and Secretary of State will finally approve it and finally a point of analysis. So now you will be able to solve all PYQs, सारे के सारे PYQs करने हैं और इस पे लिखना है. कर्जन के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा but later. Now this stretch we have completed. These three topics were very important. Mayo, Ripon and Lytton. Now you are familiar with these three. लिख सकते हो ना आंसर? Mayo, Ripon and Lytton. और अब एग्जाम में चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे. यूपीएससी इज एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज, सो इट्स नॉट लाइक क्या पिछले 10 साल से पढ़ाया जा रहा है. ओके, माई लेक्चर्स आर ऑल्सो इम्प्रूव. पूजा आपने पहले क्लास करी थी, एक दिन बाद भी हो रही थी, तो तब की क्लास में और अब की क्लास में कितने नए टॉपिक्स का इंक्लूजन है? इज इट द सेम? क्या सेम है? नहीं. एंड दिस इज यूपीएससी एग्जाम. स्टूडेंट्स को भी अपना पढ़ने का तरीका, अप्रोच, आउटलुक लगातार डायनेमिक रखना होगा. इट शुड नॉट बी स्टैटिक. 1 or 2 years after you will see there is a change in syllabus, and the teacher should also, okay, exactly. And what I find that the history teachers, their notes for the last 10 years are similar. एक जैसा चल रहा है. ठीक है, आप किसी टीचर का मार्केट से नोट्स उठा लो 2008 का और फिर जाके 2016 का, फिर जाके 2024 का, द नोट्स आर सेम. ठीक है, नोट सेम है. और उनका भाई सबसे पहला हमला हो जाएगा, वी हैव 25 ईयर 30 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. अपनी तो एज ही हो रही है 33 34, तो हम कहाँ टिक पाएंगे 30 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस के सामने, है ना? तो उस एक्सपीरियंस का क्या करना है भाई, राइट? सो ईच एंड एवरी वन शुड बी डायनेमिक. स्टूडेंट्स को इतना डायनेमिक होना पड़ता है. प्रीलिम्स में देखो कैसे यू टर्न हो जाता है, पेपर का मॉडल चेंज हो जाता है. 2-3 साल से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो अचानक से पैटर्न चेंज. कभी कट ऑफ एकदम शूट कर जाएगा, कभी कट ऑफ नीचे चला आएगा. तो डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? बच्चे को लेना पड़ेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में कि क्या करना है. ओके, तो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट, ओके, दैट डायनेमिज्म कितनी ज्यादा है, डायनेमिक कितने ज्यादा हो, आप चेंज को कितना एकोमोडेट करते हो, और आपका रोल भी क्या होगा आफ्टर यू ज्वाइन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. ठीक है, मैं बोर हो जाता हूँ अपने रोल से. एक ही काम करना है, पढ़ाना है, वो भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, हिस्ट्री. दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करो तो फिर ये आइडेंटिटी खराब हो जाएगी. लोग सजेशन करते नहीं नहीं हिस्ट्री छोड़ के दूसरा मत पढ़ाना, कभी मत पढ़ाना. नहीं तो इट विल बी बैड. ओके, इट विल गिव. नहीं, आप लोग पढ़ाऊंगा बट मैं उसको ऑनलाइन केवल हिस्ट्री में ही रखूंगा. ठीक है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब एक टॉपिक है जिसपे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. दैट विल बी ओपन डिस्कशन एंड दैट इज, ओके, write a topic, that is factors that were responsible for the growth of, read this, factors that were responsible for the growth of nationalism in India. Factors that were responsible for the growth of nationalism in India. Factors that were responsible for the growth of nationalism in India. ठीक है, बिफोर वी इंटर इनटू डिस्कसिंग द फैक्टर्स, उस फैक्टर को डिस्कस करने से पहले एक डिबेट है. एंड वेन एवर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम, यू मस्ट मेंशन दैट पॉइंट इन द वेरी बिगिनिंग पार्ट ऑफ योर आंसर. वो जरूर लिखना, इससे आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. ये नहीं कि सीधा फैक्टर फैक्टर लिखने लगना है, नहीं. राइट दिस आंसर. आंसर में राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपके आंसर का, दैट यू मस्ट राइट इन योर आंसर. राइट दिस, ओके, राइट. This issue is debatable. Read this. The issue is debatable. यहाँ पे ये issue क्या है? It is debatable, and the most important debate here is stimulus response debate. The most important debate is what? A stimulus response debate. This issue is debatable, and the debate is stimulus response debate. ठीक है? Stimulus response debate. Okay, and what is this stimulus response debate? इस बात को समझो. Stimulus and response. Stimulus and response का मतलब ये हुआ, read this, it means that, okay, the growth of Indian nationalism in India was as a result and reaction, was as a result
and reaction to colonial policies. It was as a result and as a reaction to colonial policies. It was as a result of colonial policies and as a reaction to colonial policies also. It was as a result of colonial policies. It was as a reaction to colonial policies also. ठीक है ना? What is the reaction to the colonial policies, result to the colonial policies? इस बात को हमें समझना है. देखो, result of colonial policies क्या है और reaction against this colonial policy क्या है? This we need to understand. तो देखो, British rule in India or the colonial government in India, okay, has two aspects. First aspect is what? During British rule, during colonial rule, what happened? New institutions were created, new policies were introduced, okay, and these policies, okay, did what? These policies, for example, just a education system, so integrated education system for all India, military system, integrated military system for all India, judicial system, integrated judicial system for all India, civil administration, integrated civil administration for all India, railways for all India, postal and telegraph system for all India. मेरी बात समझ गए? इससे क्या हो रहा है? It means various institutions were built or developed in India. Various infrastructure development works were done in India. ठीक है? जैसे मान लो कि English system of education was promoted, scientific and technical education was promoted. Okay, so will it provide benefit to the Indian people? Yes or no? Yes. ठीक है? Military system of administration में there is no any sense of untouchability. Okay, upper caste, lower caste people are serving army, they are dining together. Railways में upper caste, lower caste people are sitting together, they are sharing their concerns. Okay, services are all India services. तो British ने क्या किया? Okay, in order to ensure the fuller exploitation of India, they develop unified systems. उनका मोटिव क्या था? इंडिया को एक्सप्लॉइट करना. इंडिया को ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा बेहतर ढंग से कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसके लिए क्या बनाया? यूनिफाइड सिस्टम. और उसका फायदा किसको हो गया? इंडियंस को. ठीक है, आपने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करी, इंडियंस पढ़ लिख गए तो वो समझने लगे दैट दिस इज व्हाट, ओके, ब्रिटिश रूल, फॉरेन रूल, कॉलोनियल रूल. ओके, द काइंड ऑफ अवेयरनेस विल बी प्रोमोटेड इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल. मेरी बात समझ गया ना? तो इसका फायदा ये हो गया कि जब लोग एनलाइटन हो जाएंगे तो वो कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसको समझने लगेंगे. दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, and when they will start understanding, the level of political awareness will increase. Okay, and this will be helpful in the growth of Indian nationalism. ये तो helpful होगा ना? ठीक है, तो अंग्रेजों ने बुरा भले ही किया लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छा काम भी किया, और उस अच्छे काम की वजह से इंडिया में क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म प्रमोट हुआ. एक तो ये एस्पेक्ट हो गया. दूसरा एस्पेक्ट क्या है? जैसे रिएक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड लिटन्स पॉलिसीज. लॉर्ड लिटन पॉलिसी की वजह से क्या होगा बताओ? ग्रैंड दरबार, फेमाइन हो रहा है, ग्रैंड दरबार, वॉर स्टार्ट कर रहे हो, मिलिट्री एक्सपेंसेस, इंडियंस विल बी डिससेटिस्फाइड, राइट? आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बाय दीज एक्ट्स व्हाट विल हैपन? इंडियंस विल बी डिससेटिस्फाइड. ध्यान से समझना इसको. ओके, व्हेन कैनिंग वाज देयर, व्हेन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट विल कम, इंडियंस विल बी डिससेटिस्फाइड. ठीक है, कर्जन आएगा, कर्जन will tighten its control over the universities, Indians will be dissatisfied. Got it? Curzon will do what? Will announce, आगे बताऊंगा, partition of Bengal, Indians will be dissatisfied. Okay, so in order to suppress the growth of nationalism, what British did? Okay, they introduced some measures, and due to these measures, Indians were unhappy, they were dissatisfied. Okay, and in this way their dissatisfaction will also promote a kind of sense of nationalism. ये promote करेगा कि नहीं? What about the peasant class? The peasant class all over the India were exploited by the British land revenue policies. The peasant of Madras, the peasant of Bengal, the peasant of Bombay, all were exploited. With the development of railways, when they will come in contact with each other,
जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, व्हाट विल हैपन? Okay, they will share their plight, they will share their concern. What will happen? Okay, they will be more united. After 1858 what happened? Crown rule was introduced in India. और जैसे ही क्राउन रूल आया, सो देयर वर टू कैटेगरी ऑफ स्टेट्स. एक कैटेगरी ऑफ स्टेट क्या हो गया? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. नाउ ऑल दोज टेरिटरीज व्हिच केम अंडर ब्रिटिश रूल, दे वेर यूनिफाइड इन अ सिंगल स्ट्रोक. वो एक ही झटके में यूनिफाई हो गए. ऑल वेर द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. सो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में क्या होगा? रूल्स, लेजिस्लेशंस, ओके, इंस्टीट्यूशंस, दे ऑल विल बी यूनिफाइड. तो इस यूनिफाइड सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन का कुछ तो फायदा होगा. वो लोगों के अंदर क्या भरेगा? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. द सेम लाइक इट हैपेंड इन द केस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ था? नेपोलियन इनडायरेक्टली, नेपोलियन unintentionally started the process of unification of Italy and Germany. नेपोलियन ने क्या किया था? सिस्टर रिपब्लिक्स बनाया, ठीक है, और उसके बाद वहां पे प्रोग्रेसिव आइडियाज प्रमोट हुए, और अल्टीमेटली लोगों ने उस यूनिटी, है ना, की फीलिंग को समझा और आगे चल के ये मूवमेंट बना. Okay, the same is happening here when British Indian provinces were unified. Okay, so there will be common institutions, there will be common law, there will be common legislations, and in this way, okay, they will get a sense of oneness. So nationalism will be promoted. nationalism क्या होगा? promoted होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन होगा हमारी कंट्री का. करेंसी सिस्टम यूनिफाई होगा. ओके, कॉमन लॉज यूनिफाइड हो गए. जुडिशियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है. ये सारी चीजें आती है. मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी इंडिया में आता है ना. क्रिश्चियन मिशनरीज विल प्रोमोट एजुकेशन. गॉट इट? और वो एजुकेशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग था. इन इंडिया द एजुकेशन सिस्टम व्हाट वाज मेनली डोमिनेंट रिलीजियस. यहाँ पे भी डोमिनेट करता है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द अनटचेबिलिटी विल ब्रेक. अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं क्या होगी? ब्रेक होगी. इसके बाद मॉडर्न प्रेस आएगा. ओके, मॉडर्न प्रेस के साथ वर्नाक्यूलर्स विल बी प्रोमोटेड. सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो बताया था आपको 19th सेंचुरी में, वो भी क्या करेगा? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या करेगा? ओके, फाइटिंग ऑर्थोडॉक्सी इन इंडियन सोसाइटी. ऑर्थोडॉक्सी से लड़ेगा. ओके, प्रोग्रेसिव आइडियाज विल बी प्रोमोटेड. इससे क्या होगा? अगेन अ काइंड ऑफ नेशनलिज्म विल बी प्रोमोटेड. फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय का हम नाम लेते हैं, राइट? फर्स्ट मॉडर्न मैन. किस चीज के खिलाफ इन्होंने लड़ा? सोशल एंड रिलीजियस एविल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विवेकानंद ने लड़ाई लड़ी, दयानंद सरस्वती ने लड़ाई लड़ी. मोटिव क्या था? To fight with the social evils and religious evils so that social unity could be promoted. And once this social unity could be achieved, it will be easier for the Indians to fight with the colonial system of government. Colonial system of government से fight करना हमारा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. ईश्वर चंद विद्यासागर promoted primers. Primers बताया था आपको. Primers के थ्रू किसको promote करना था? Vernaculars को. वर्नाक्यूलर्स को प्रमोट करोगे तो इसका फायदा क्या होगा? ओके, आम लोगों तक आपकी बात आसानी से पहुंच पाएगी. एंड इन द इनिशियल फेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देयर वाज अ स्ट्रीम दैट वाज पॉपुलराइज्ड, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटलिज्म. बताया था आपको 1757 टू 1813 व्हाट वाज प्रोमोटेड? ओरिएंटलिज्म. एंड ओरिएंटलिज्म में क्या होता है? ओके, प्रोमोटिंग रिसर्चेस अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, ग्लोरियस पास्ट, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है, राइट? Many British scholars came forward. Max Muller, William Jones, Charles Wilkins were the British scholars. Okay, Asiatic Society, 1784. Okay, William Jones is an important name. Theosophical Society was promoting the same. So the sense of Orientalism will promote what? The Indian people will came to know about their glorious history. और जब आपको आपकी ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में पता होगी, एंड व्हेन द ब्रिटिश विल क्लेम दैट इंडियंस आर इंफीरियर and the British are superior, you can make counter arguments against this. आप counter arguments दे सकते हो कि ना भाई हम inferior नहीं हैं. This will happen. Okay, so this will promote a kind of self respect among the Indian people. Okay, a kind of idea of religious universalism will be promoted. This will promote a kind of religious unity. Hindus, Muslim will come together, right? Socio-religious reforms in India were like the phase of Indian Renaissance. So rationalism will be promoted, use of reason will be promoted, scientific inquiry will be promoted, and this worldliness will be promoted. So when Indians will be able to fight with
orthodoxy, obviously we can say that they are moving towards a progressive system, and in this progressive system they will be able to evaluate the presence of colonial rule in India. What about the role of Indian educated class? The same educated class which remained neutral in the revolt of 1857, they did what? They contributed in the growth and development of regional political associations in India. Okay, they tried to promote political awareness among Indian people. In Bengal, many regional political associations were established, like Bang Bhasha Patrakarit Prakashika Sabha, right? Landholder Society, Bengal British India Society, British Indian Association, Indian League, Indian Association. These all are RPAs which were set up under the leadership of, okay, educated Indians. And this will do what? This will promote the level of political awareness among the Indian people. In Bombay, the same was that Pune Sarvajanik Sabha was one of the most important organization. Okay, Bombay Association, Pune Sarvajanik Sabha. In Madras, Madras Mahajan Sabha was an important organization, right? Outside India also some political associations were made. East India Association is one of the most important example. And all these efforts promoted nationalism in India. So can we say that nationalism in India is due to result of two things? First, okay, the good works that were promoted by the British, okay, the result of British rule in India, development of institutions, education and all this helped a lot. But at the same time, the reaction against the British rule, the colonial system of exploitation, exploitative land revenue policies. Okay, when the British were promoting education, they were doing what? They were trying to promote westernization. They were trying to promote English system of education. They were discriminating with the vernaculars. These are the important ideas. Got it? So this is what the factors that promoted the growth of nationalism in India. And this is your home assignment. You will write the answer of this question. What are the factors responsible for the growth of nationalism in India? Okay, so kahin bhi in one or two line you must mention about this word stimulus response debate. You will write that partly as a result of British policies and partly as a response to the British policies. ये बात बताओगे, ठीक है ना? It means that it was a result of both these two things. Okay, the growth of Indian nationalism was as a partly as a result of British policies, and it was also partly as a response or reaction to the British policies. ठीक है ना? You will try to write the answer in only 150 words. ठीक है ना? Important ideas को, और कल एक बार और मैं बोर्ड पे पॉइंट्स को लिख दूंगा, important points, but you must try to write the answer. Okay. अच्छा, you have already done it, Akash. Okay, good. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आपको लग रहा है कि चीजें कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है? और इस तरह से जब आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं. तो इसके लिए आपको पहचानना होगा टॉपिक्स को. और ये साइट कैसे आएगा, इनसाइट कैसे आएगा? जब आप PYQs पढ़ोगे. When I say that Mayo is important, Ripon is important, Lord Lytton is important, तो ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई चमत्कार और मुझे ऊपर वाला आगे सपना दिखा रहा है कि दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट. नहीं, वो PYQs मैंने बार बार देखे हैं. अब मैंने GS के देखे हैं, ऑप्शनल के क्वेश्चंस देखे हैं. ऑप्शनल के क्वेश्चन में भी यही थीम पूछे जाते हैं. इट मींस दीज थीम्स आर इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया था यूटिलिटेरियन अप्रोच, एक ऑप्शनल का क्वेश्चन सेम पूछ लिया था हिस्ट्री ऑप्शनल में. ठीक है, मैंने बताया था, वो क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया. ठीक है, तो देखो क्या होता है, ऐसा नहीं है. जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल हो या GS हो, दे विल पिक इंपॉर्टेंट थीम्स. बट प्रीलिम्स के केस में क्या होता है, इंपॉर्टेंट थीम्स दे हैव रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. तो उस इंपॉर्टेंट थीम्स में जो गैप्स है, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करो. ठीक है ना? और आपको आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स का मिल जाएगा. राइट इट? ओके, गॉट इट? चलिए, तो वी विल कंटिन्यू आवर क्लास फ्रॉम द नेक्स्ट डे. हाँ, नहीं मेंस ये तो उसको फैक्ट पोर्शन में अपडेट कर लेना. राइट, अपडेट इट इन द फैक्ट्स पार्ट. ठीक है ना? गॉट इट? और कल से हम स्टार्ट कर लेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है ना? INC. बट INC पढ़ने के पहले हाँ, INC स्टार्ट हो जाएगा. आई थिंक टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जैक्टली कल 1885 से स्टार्ट करेंगे हम. और मतलब वी हैव ऑलरेडी इंटर्ड इनटू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि नेशनलिज्म वी कैन से दैट विल नॉट कम इन अ सिंगल डे.
1885, yes, we accept that year, that birth of INC marks the beginning of Indian nationalism in India, but it will not happen in a single day, na? Okay, so this is the year 1858 to 1885. In this period, what we see the growth of Indian nationalism, and this will be continued after 1885 also. 1885 के बाद भी ये क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना? So this is the entire debate. चलिए, you will try to write the answer, ठीक है? लिटन पे, मेयो पे, रिपन पे, and growth of Indian nationalism. Okay, in 150 words, in your own words. Okay, write short note. ये जरूर लिख लेना, एक बार खुद से लिख लेना. लिटन, मेयो, रिपन and growth of Indian nationalism. Write 150 word answer by yourself. Question खुद से frame कर लो, simple question and write answer. Because when they will ask question, they will ask two questions, they will add two questions in a single question. तो हमारे पास आइडियाज जब रहेंगे वी कैन इजीली कनेक्ट एंड राइट, तो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है. दिस फॉर्मेट इज मोर इजियर टू राइट. मुझे जो लगता है कि अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अगर 2-3 क्वेश्चन इंटरलिंक हो रहे हैं, तो आपके पास अगर इंफॉर्मेशन कम है तो भी आप क्या कर सकते हो, इन इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके एक अच्छा आंसर प्रेजेंट कर सकते हो. लेकिन जब सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. Okay, so this format is easier if you are able to correlate the things. Okay, any doubt, any question? नहीं, चलिए, thanks to all of you. Thank you, sir. Welcome.